Hello, third class students. How are you all? I hope you all are fine. Yes, ready for today's class? Let's start our today's class. Now, student, tell me what we have learned in our previous class. We have learned about different places in the neighborhood in the previous class. So, student, let's start our class. Students, this is your block 5 and this is the part 3 of your block. This is block 5 and this is part 3 of your block. Now students, tell me, who are the other people in your neighborhood apart from your neighbors? Who are the other people in your neighborhood? Let's discuss. There are postman, shopkeeper, teacher, policeman, and doctors in our neighborhood. So students, look at these pictures. Student, look at these pictures. What we learn today? Today we will learn about some important people who are a part of our neighborhood. Clear? Next. Now student, look at these pictures. Look at this picture, this one and this one. Look at these pictures carefully and now students, tell me, who are these people? Who are these people? This is policeman. This is teacher. This is postman. And this is doctor. So these are the people. Now students, tell me, what do they do? What do they do? These are the people: teacher, policeman, this is a table. Who are these people? There is a teacher, policeman, doctor, and postman. And now student, tell me, what do they do? Let's discuss. Policeman protects us from many dangers like robbers and thieves. Teacher helps students learn in schools. Doctor treats people who fall sick. And the postman delivers letters from one place to another. Clear? Next one. Now students, tell me, can you think of some other people from your neighborhood who help us? Think and tell me the answer. Let's discuss the answer. Students, there are people like the sweeper, garbage cleaner, washerman, न्यूज़पेपर मैन, जो न्यूज़पेपर सप्लाई करता है ना, न्यूज़पेपर मैन, शॉपकीपर, वेजिटेबल और फ्रूट sellers, security guards, cobblers and barbers. These are the people in our neighborhood. Now students, they all help us in different ways. People like sweeper and garbage collector keep the surrounding clean. स्वीपर और गार्बेज क्लीनर क्या होता है? हमारे जो चारों तरफ का जो एरिया होता है उसको क्लीन रखता है.
The shopkeeper, vegetable and fruit seller, security guard, gardeners, milkman provide service by keeping necessary item in a daily use. जो शॉपकीपर और वेजिटेबल और फ्रूट सेलर रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, गार्डनर्स हैं, वो हमें क्या करते हैं, जो हमारी डेली नीड की थिंग्स होती हैं उनको फुलफिल करते हैं. ओके, द सिक्योरिटी गार्ड प्रोटेक्ट्स द नेबरहुड. सिक्योरिटी गार्ड क्या करेगा, हमारे नेबरहुड को प्रोटेक्ट करेगा. द गार्डनर कीप्स द नेबरहुड ब्यूटीफुल बाय वाटरिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ द प्लांट्स रेगुलरली. जो गार्डनर होता है वो हमारे जो नेबरहुड है उसको क्लीन रखेगा, उसके जो आसपास का एरिया है उसको क्या करेगा, गार्डन को और प्लांट्स को वाटर देगा और उसकी केयर करेगा प्लांट्स की रेगुलरली, जिससे हमारा जो नेबरहुड है वो क्लीन हो जाएगा और सुंदर दिखेगा, ब्यूटीफुल. द कोबलर एंड बार्बर ऑफर देयर सर्विसेज व्हेन पीपल नीड दैम. कोबलर क्या करेगा, हमारे जो शूज़ हैं वो मेड करेगा और फुटवेयर हैं उनको भी शूज़ और फुटवेयर को मेक करता है. और बार्बर क्या करता है, हमारे जो कट हेयर को ट्रिम करता है या फिर उनको कट करता है. सो इन दिस वे दीज आर द पीपल हेल्प अस इन डिफरेंट वेज. नाउ स्टूडेंट्स टेल मी, why do different people do different things in a neighborhood? What if they all did the same thing? अगर वो सारे सेम थिंग करें तो what will happen? Now let's discuss. Students, every person living or working in a neighborhood has a role and a responsibility. Different people do different things because everyone may not be able to do the same things. A doctor may know how to treat the sick but may not know how to fix a wire or cut hair. We would need a electrician and a barber for the other tasks. एक डॉक्टर है सपोज, वो उसको सिर्फ जो सिक पीपल है उनकी टेक केयर कर सकता है, उसको फिक्स नहीं करना आता कि उसको वो नहीं जानता. मे भी हो सकता है किसी डॉक्टर को पता हो, बट मोस्टली डॉक्टर्स को नहीं पता कि वायर को कैसे फिक्स करना है, फ़ैन को कैसे लगाना है, हेयर कैसे कट करने हैं, कौन सी कटिंग करनी है, हेयर को कैसे कट करना है. तो इस डॉक्टर का वर्क नहीं है ये. सो आपको अगर वायर फिक्स करवानी है या आपका फ़ैन आपका वर्क नहीं कर रहा है तो आप किसके पास जाओगे, इलेक्ट्रिशियन के पास. और आपको हेयर कट करवाना है तो हम कहाँ जाएंगे, बार्बर के पास. ओके, नाउ क्लियर. नेक्स्ट वन. नाउ स्टूडेंट, these are the keywords. First, people. Next one is teacher. Third one is doctor. Fourth one is policeman. Next one is postman. So these are the keywords and you have to write down these keywords in your notebook, in your SS notebook. Okay, next one. So student, let's discuss. In this class we have learnt about different people in the neighborhood. In this class we have learnt about different people in the neighborhood. Okay, now students, thank you for watching this video. Watch it carefully.